Hello and welcome you all. Let's start our discussion and solve question paper of OPSC PGT Physics. As you know, OPSC PGT exam includes two papers, Part A and Part B. Part B is your subject paper, that is physics paper, and this paper contains 100 questions. In this video, we will solve up to question number 20 and we will continue in the next video. ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो देखो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने की मोटिव यही है कि आप लोगों को बस एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है और लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है। और हमने यही ट्राई किए है कि जैसे ही आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं ताकि जो सारे क्वेश्चन है और क्वेश्चन के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है बस आपके एक बार रिवाइज हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द लीजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज गिवन बाय। देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, बस तुम्हें ये लीजेंडरी पॉलिनोमियल याद होना चाहिए। एंड वी नो लीजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ nth ऑर्डर इज गिवन बाय 1/2 to the power n factorial dn dxn डेरिवेटिव nth ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x square minus 1 to the power n. Okay, so you have to remember this polynomial. So from here you can calculate legendary polynomial of any order, like p0x is equal to 1, p1x equal to x, p2x equal to half 3x square minus 1, p3x equal to half 5x cube minus 3x. So legendary polynomial of degree 2 is given as half 3x square minus 1. So now check your option. Your correct option is option C. Question number 2, the gamma function is defined as। देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। वी नो गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज 0 to infinity exponential minus t to the power n minus 1 dt. So now check your option. Correct option is option ए। देखो एक्चुअली ऑप्शन ए में ना एक्सपोनेंशियल -1 जैसे दिख रहा है, वो क्या होगा कि -t होगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन हो गया, तो इसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है वो सब याद रख लेना। जैसे कि देखो गामा n+1 इक्वल टू n गामा n और गामा n+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, और इसके जो कुछ वैल्यू भी याद रख लेना। जैसे कि गामा 1 इक्वल टू 1, गामा ऑफ हाफ इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर पाई एंड गामा 0 इज अनडिफाइंड। Undefined. Question number 3, the Bessel function j half x is। देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ये बेसल फंक्शन याद होना चाहिए। जैसे कि देखो j half of x is given by square root under 2 by pi x sin x. So your correct option is option B. देखो ऐसे और एक बेसल फंक्शन है जो कि j माइनस हाफ ऑफ x इक्वल स्क्वायर रूट अंडर 2 बाई पाई एक्स cos x. ओके, सो ये दोनों याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, द लागोरे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज गिवन बाय। वी नो लागोरे पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n इज गिवन बाय exponential x over n factorial dn dxn x to the power n exponential minus x. So from here we can calculate Lagrange polynomial of any order, like L0 x equal to 1, L1 x equal to 1 minus x, L2 x equal to half of x square minus 4x plus 2. So Lagrange polynomial of order 2 is given by this expression. Now check your option. अच्छा देखो ऑप्शन में ये हाफ को इंक्लूड कर लिया है। सो L2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 1. So your correct option is option D.
Question number 5. The value of integral dz by z for counterclockwise direction around a unit circle is. We have to find this integral, and this question is from complex analysis. From Cauchy residue theorem, we know that for any complex function f of z which is single valued and analytic in a simple closed curve C, except at some finite singular points, the integral closed integral f of z dz is given by 2 pi I times sum of residues at poles within C closed curve. So here our complex function f of z is 1 by z. Now we have to find the residues at poles within C. Poles means the function at which the function is not analytic, or we can say the function at the point which it is not defined. So you can check at z equal to 0 the function is not defined, so this is a pole. So it is a simple pole, and you have to remember how to calculate the residues at a simple pole or at a pole of nth order. डिफरेंट फॉर्मूला है तो एक बार रिवाइज कर लेना. जैसे कि दिस इज ए सिंपल पॉल एंड रेसिड्यू फॉर ए सिंपल पॉल एट जेड इक्वल टू 0 इज गिवन बाय लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड माइनस 0 एफ ऑफ जेड इज 1 बाई जेड. तो देखो ये जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रेसिड्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 1. सो नाउ डी जेड by z equal to 2 pi I times sum of residues at poles within C. देखो एक ही पोल था तो एक ही रेसिड्यू, तो क्या हो जाएगा ये 1. सो दैट इज इक्वल टू 2 pi I. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B. Question number 6. The value of this integral is. देखो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है. दिस इज फ्रॉम ऑल्सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड वी हैव टू फाइंड दिस इंटीग्रल. सो वी नो एफ ऑफ जेड डी जेड विल बी इक्वल टू 2 पाई आई टाइम्स सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स विद इन C. Now here our f of z equals to z cube minus 6 by 2z minus I. So first find pole for this function. See if we equate this denominator into 0, that will give us pole, because if it is equal to 0 then the function is not defined. So from here z equals to I by 2. So this is the pole for this given complex function. Now we have to find residue for this pole. Again this pole is a simple pole, so residue z at z equal to I by 2 equals to limit z tends to I by 2 z minus I by 2 function f of z fz. So this is the fz. So z cube minus 6 by 2z minus I. So now calculate it. Limit z tends to I by 2 2z minus I by 2 z cube minus 6 2z minus I. So 2z minus I cancel. Now calculate this. It is equal to minus I by 8 minus 6 half multiplied with half. So this is our residue. Now we will apply this Cauchy residue theorem. Now closed curve C z cube minus 6 2z minus I dz equals to 2 pi I times sum of residues. Only one pole, so only one residue, so and that is minus I by 8 minus 6 times half. So now calculate it. 2 cancel,
Now it is equal to pi by 8 minus 6 pi I. So your correct option is option A. Question number 7. If Lebesgue tensor 1 to 3 is an antisymmetric tensor of third rank, then this expression equals to. So we have to find value for this expression, and this is Lebesgue tensor, that is IJK. You have to remember its properties so that you can easily solve this problem. देखो जैसे कि epsilon IJK, if this index follow even permutation, that is cyclic order, that is if 1 2 3, that is equal to 2 3 1 equal to 3 1 2, if this index follows cyclic order or even permutation, then its value equals to 1. Okay, similarly next, if this index follow odd permutation, that is 1 3 2 equal to 2 1 3 equals to epsilon 3 2 1, then its value is equals to minus 1. And if any of the index, any of two index are equal, that is 1 1 2 or 2 2 1 or 3 3 1, then its value is equals to 0. Now use these properties in this given expression. So देखो जैसे कि एप्सिलॉन 1 2 3 है, this is following even permutation or cyclic order, so its value is equal to 1 plus 2 1 3, so it is following odd permutation, so its value is minus 1. And देखो in this Lebesgue tensor two index are equal, so its value is 0 minus 0, so 2 minus 1 equal to 1. So your correct option is option B. Question number 8. SU2 group has 2 cross 2 matrices with determinant. देखो SU2 means special unitary group, and special unitary group matrix contains unitary matrices. Unitary matrices of determinant 1. So your correct option is option A. देखो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रुप थ्योरी, सो जैसे कि बाकी सारे है ऑर्थोगोनल ग्रुप, यूनिटरी ग्रुप, तो वो सब भी एक बार रिवाइज कर लेना. क्वेश्चन नंबर 9. द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, देखो वी नो एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L वेक्टर इज गिवन बाय r cross p, where r is the position vector, p is the linear momentum. So your correct option is option B. जैसे कि देखो ऑप्शन ए में गिवन है ना r क्रॉस f, तो वो भी याद रख लेना. टॉर्क टाउ इज गिवन एज r क्रॉस f. r is the position vector, f is the force. Question number 10. Which of the following describes the Lagrangian equation of motion? We know Lagrangian equation of motion is given by dy dt del L by del Q dot minus del L by del Q equal to 0, where Q is your coordinate. So according to your option, देखो बस x coordinate given है, so Q is x, so we can write dy dt del L by del x dot minus del L by del x equal to 0. So देखो वो पहले वो क्या हुआ है कि वो माइनस साइन एक कॉमन ले लिया गया है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि एक माइनस साइन तुम कॉमन ले लोगे, डेल एल बाई डेल एक्स माइनस डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट इक्वल टू 0. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 11. In an orthogonal transformation xi dash equal to aij xj, then aij ajk is. To solve this question, you have to know the properties of Kronecker delta, and from orthogonality condition, from orthogonality condition,
we know that Ajk equals to del Ik. Okay, so here your correct option is option C. Question number 12. Which of the following relation is correct? देखो सारे ऑप्शन एक बार चेक कर लो एंड फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स सो you can check there angular momentum is given by I omega where I is the moment of inertia of the object and L is the angular momentum, omega is the angular velocity. So correct relation is this. So your correct option is option A. Question number 13. For small oscillation, a potential function Vx is expanded around its equilibrium value as Vx equal to Vx naught plus del V by del x at x naught times x minus x naught plus half del square V by del x square at x naught x minus x square. Then at equilibrium, which term in the RHS will be 0? A potential function Vx is expanded around its equilibrium. Now we have to find the condition at equilibrium which of the term will be 0. देखो equilibrium, we know equilibrium represents that net force should be 0 there. So at equilibrium point net force should be 0 and we know force is defined as minus del V by del x. So if at equilibrium point net force is 0, that means del V by del x at that equilibrium point should be equal to 0. So according to the question, this second term will be 0 at equilibrium point. So your correct option is option B. That is for equilibrium this second term is 0. Question number 14. If the Lagrangian L equal to half m x dot square minus half k x square, then the equation of motion is, Lagrangian is given, we have to find the equation of motion and we know Lagrangian equation of motion is given by d by dt del x dot minus del L by del x equal to 0. So from the given Lagrangian we have to calculate this term. So calculate del L by del x dot, that will be equal to m x dot and del L by del x equal to minus k x. So now use this value in the given equation of motion. So d by dt m x dot minus kx equal to 0. So it is equal to m x double dot plus kx equal to 0. Now check your option. So m x double dot equal to minus kx. So your correct option is option A. Question number 15. The sum L plus h of the Lagrangian and the Hamiltonian of a particle with coordinate x is, देखो we have to find the expression for L plus h and we know the conversion formula between L and h, that is L equal to summation pi qi dot minus h or h equal to summation pi qi dot minus L. So from this formula we can directly write that L plus h equal to summation I pi qi dot. देखो according to question we have to consider only one coordinate, that is x. So we can write L plus h equal to p x dot L plus h equal to px x dot from this formula. So now we have to express this px
in terms of L or H, and we know Px is defined as del L by del x dot. So L plus H equals to del L by del x dot x dot. So now check your option. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देखो एक्चुअली ऑप्शन बी में वहाँ पर डॉट मिसिंग है, ठीक है ना, वो दैट विल बी एक्स डॉट डेल एल बाई डेल एक्स डॉट। क्वेश्चन नंबर 16, Jacobi's identity is, we know Jacobi identity is given by for variable u v w plus v w u plus w u v. Just follow the cyclic order of this variable, that is equal to 0. So this is your Jacobi identity. So your correct option is option C. Question number 17. For a one-dimensional system with Hamiltonian h equal to p square by 2 minus 1 by 2 q square, the constant of motion is. So Hamiltonian is given and we have to find the constant of motion. From Hamiltonian dynamics we know that if f is a constant of motion, then its total time derivative must be 0. That is, if f is constant of motion, then total time derivative del df by dt should be 0. And in Hamiltonian dynamics, this df by dt equals to Poisson brackets of this function f with respect to Hamiltonian plus del f by del t equal to 0. So you can check with your option which satisfy this equation, that is Poisson's bracket with Hamiltonian plus del f by del t equal to 0, that will be constant of motion. So देखो एक्चुअली जो मेरा आंसर आ रहा है ना, ये आ रहा है कि फॉर दिस गिवन Hamiltonian constant of motion is pq by 2 minus ht, जो कि देखो कोई भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक और समथिंग एल्स, सो यू शुड ट्राई दैट. ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट टू फाइंड ए कांस्टेंट मोशन इज दैट कि टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन शुड बी इक्वल टू 0 और दिस condition should be satisfied. Question number 18. For a canonical transformation of the form small p equal to f of p cos q and small q equal to f of p by omega m omega sin q, the Hamiltonian is. So canonical transformation are given, we have to find the Hamiltonian. So let us define the initial Hamiltonian, that is h equal to p square by 2m plus half m omega square q square. Now after this canonical transformation, now your new Hamiltonian is given as s dash equal to h plus del f by del t, where capital F is your generating function. So now you can check for this generating function from this canonical transformation is that your generating function is independent of t. So this term will be 0. So now the new Hamiltonian will be equals to your initial Hamiltonian. So now the new Hamiltonian will be equal to p square by 2m plus half m omega square q square. Now use the value of small p and small q, that is small p equal to f square capital P cos square q by 2m plus half m omega square f of p square by m square omega square sin square q. Now
देखो m omega square will be cancelled out, m cancel, so that will be equal to f of p square by 2m cos square q plus f of p square by 2m sin square q. Now this is equal to f of p square by 2m. So your correct option is option C. Question number 19. Which of the following is not a Maxwell's equation? देखो which is not a Maxwell equation. So एक बार सारे ऑप्शन चेक कर लो, जो चारों ऑप्शन गिवन है। देखना जो ऑप्शन डी में है ना, डेल रो बाई डेल टी प्लस div j equal to 0, this is the equation of continuity. So this equation is not a Maxwell equation. So you can check all three options. देखो option A that is Gauss law in material medium. ऑप्शन बी कॉर्ल इक्वल टू -1 बाई सी डेल वी बाई डेल टी। देखो वो जो ऑप्शन है ना, हम सारे कैसे लिखते हैं कि कॉर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी ऐसे लिखते हैं ना। देखो लेकिन ये जो ऑप्शन में गिवन है ना, ये ऐसे कुछ है, कॉर्ल ई इक्वल टू -1 बाई सी डेल पी बाई डेल टी। तो देखो ये क्या है कि ये भी दिस इज ऑल्सो मैक्सवेल इक्वेशन, बट दिस इक्वेशन इज इन CGS यूनिट. Okay, this is in SI unit. So this is also a correct Maxwell equation. So your correct option is D, which is not a Maxwell equation. Question number 20. The force acting on a particle of charge q and velocity v in the presence of a magnetic field is. देखो we have to find a expression for magnetic force on a charge particle. देखो हमें पता है कि magnetic force on a charge particle is given by q v क्रॉस b. लेकिन देखो सारे ऑप्शन एक बार चेक करो, क्या है कि c इंक्लूड है। दैट मीन्स देखो ये जो हम फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज इन SI यूनिट, बट ये जो ऑप्शन में पूछ रहा है ना, वो CGS यूनिट में पूछ रहा है, CGS यूनिट, इसीलिए सारे देखो ऑप्शन में c इंक्लूड हुआ किया गया है। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स इन CGS यूनिट इज गिवन बाय q बाय c v क्रॉस b, where c is your speed of light in space. So your correct option is option B. देखो ऐसे भी ना तुम एक बार याद रख लेना, जो सारे इक्वेशन को CGS यूनिट में कैसे लिखेंगे, ठीक है, और सारे क्वांटिटी को कैसे कन्वर्ट करेंगे SI से CGS, वो भी एक बार रिवाइज कर लेना। So we have completed 20 questions in this video, so we will continue in the next video. देखो जैसे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम किसी क्वेश्चन में थोड़ा डिस्कशन थोड़ा कम कर रहे हैं। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कशन चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम उस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।